our exercise is function is theta cos theta, and its value is from its value is from minus pi by 2 to 3 pi by 2. Okay, and the range was minus 1 to plus 1. That was firstly satisfy Rolle's condition. क्या था आपके पास? Secondly, find stationary points. Third, find maximum and minimum value of this function. Yes, this was a question. Hadi, this was a question. Yes, sir, यही था. Okay. Now, for first solution, what will be the solution? Yes. This color is not too good. Okay, so what is the solution? Satisfy cos theta. What is the initial and final value? Cos minus pi by 2. Firstly, we have to draw the graph. Okay, हम usually graph पहले draw करते हैं. So, what will be the graph for this? Okay. This is सर the नहीं graph. सर, आपने बना दिया. जी सर जी नहीं, अब आप ठीक है. ठीक नहीं है. सर आपने थोड़ा सा ज्यादा बना दिया लेफ्ट साइड वाइज नहीं तरफ वो से मैं ग्राफ. करूंगा ना. पहले मैं हमेशा यही बनाता हूँ, पूरा ग्राफ बनाता हूँ, और उसमें से जो हिस्सा है वो याद होगा. क्लास में भी मैं ऐसे करता हूँ, पूरा ग्राफ बना लिया ताकि आप उसको अच्छे तरीके से समझ सको, और उसमें से बाद में कट लगा. आपका ग्राफ क्या है? डोमेन एंड रेंज के आपके पास माइनस पाई बाय 2 एंड 3 पाई बाय 2. minus pi by 2 to 3, sorry, not 3 पाई close, बाय 2. not open, close. That will be a close point. Okay, minus pi by 2, because these points are included. 3 pi by 2. Okay. Okay. So here theta is this is a theta line. Okay, and this is a cos theta. Okay, y-axis along the cos theta, and x-axis along that is a theta. What are the point? Here theta is 0. Here theta is pi by 2. Here is 2 pi by 2, mean pi. Here will be a 3 3 pi पाई by बाय 2. 2. Here will be a minus pi by 2. And that is our, this will be a minus 2 pi by 2. Okay. Minus 3 pi by 2. Okay, and so on. But because we don't need it, need that point, so but our sorry, we are restricted to this domain and range. Yes. जी सर. We are restricted to. So this was a cos theta, and cos theta value at minus pi by 2 is 0, and at cos 3 pi by 2 that is 0. So and so first condition satisfy. First condition, Rolle's theorem condition satisfy.
Okay. So role theorem condition satisfied. जी Okay. सर. So that is okay. So now we will move toward the next point. Yes. Next is we have to find the stationary point. So how we will find the stationary point? सर डेरिवेटिव ले लेंगे इसका. Yes. Function is cos theta and जी सर. fi theta I. हमें डिफरेंट पॉइंट निकालने. थीटा पे तो वो नहीं होगा, बट हमें स्पेसिफिक पॉइंट पे, ठीक है, वो that will be a minus sin theta. Yes, first derivative will be a minus sin theta, and that must be जी equal सर. to 0. And for here, when we multiply minus with the 0, then that will be a 0. Okay, so that may be right in this theta I equal to 0. Okay, and this implies जी that सर. theta I is a sine inverse of 0. 0. एंड साइन इनवर्स साइन किन पॉइंट पे 0 होता है? वैसे तो हम ग्राफ से भी देख सकते हैं, दैट इज मोर इजी. -π/2 पे, π/2 पे हमने 3π/2 तक जाना है ना, तो वो 3π/2 पे इस पे 0 आ रहा है. नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, दिस इज अबाउट, दिस ग्राफ इज अबाउट द cos थीटा और वैल्यू इज द sin थीटा. हमें ग्राफ से नहीं मालूम कर सकते, हमें डायरेक्टली पता चलाना होगा. sin थीटा किस पे, जैसे उस पे भी किया था, cos पे भी. तो sin थीटा किस पे 0 है? साइन थीटा जो होता है वो 0 पे होता है. साइन 0 होता है, थीटा 0 होता है 2n पाई पे, सॉरी 2n पाई पे. cos 2n अच्छा, इसको नहीं, साइन थीटा को हम एन पाई भी लिख सकते हैं, 2n पाई के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या एन पाई भी लिख सकते हैं, एन पाई पे. n इक्वल टू 0, 0 पे 0 है. एन इक्वल टू एन की वैल्यू जो है वो आपके पास है 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन. ठीक है, तो आपकी वैल्यू की रेंज है, थीटा की रेंज है. अच्छा, ये आपकी रेंज है ना जो डिफाइन है, ये साइन थीटा की रेंज. तो इसके दरमियान आपके पास आ रहा है थीटा एन इक्वल टू 0 पे, यानी पाई भी इसकी रेंज में आ रहा है. तो स्टेशनरी पॉइंट इज 0. So this implies that stationary points 0, पाई, 3 पाई, 3 पाई. तो इसमें देखो ना, यहाँ आता है n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 1 पाई, n इक्वल टू -1 बन जाएगा -पाई. -पाई इज आउट ऑफ द -π/2, क्योंकि हमारी रेंज थी -π/2, नेगेटिव में -π/2 तक था, यानी पाई का हाफ. तो पाई तो आउट चला जाएगा. और अगर हम लेते हैं 2 पाई लेते हैं, तो 2 पाई जो है वो ग्रेटर देन 3π/2 से. पार्शियल वैल्यू 2 पाई तो यहाँ आएगा ना, 3π/2, 2 पाई यहाँ आएगा. 2 पाई इज आउट ऑफ दी, 4π/2 इज इक्वल टू 2 पाई है ना. 2 पाई आउट है 3 पाई से, तो आपके पास ये आ जाएगा 0 n पाई. ठीक है हादी, हादी, अब्दुल हादी, गॉट इट? सर जी सर ऐसी ही है सर, लेकिन मैं आपसे एक दूसरी चीज पूछना चाह रहा था कि अगर हम इसको एन पाई की जगह 2n π/2 लिख दें. देन दैट इज 2 से 2 कैन, वही बात है, वो भी ठीक है. जी सर. वैल्यू तो यही आएगी, 0 n पाई. 2 पाई/2 आ जाएगा नहीं सर, बराबर. वो उस तरह से वो फॉर्मूला दोनों का सेम हो जाएगा ना, हाँ इंटरवल्स हाँ, निकालने का. दैट इज आल्सो, मतलब आपको पता है इसको इवन फंक्शन की फॉर्म में भी, यू आर राइट, यू मे जी सर. राइट इन द फॉर्म ऑफ 2n π/2, यू मे राइट इन दिस फॉर्म टू. ओके, सो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 n पाई. सो स्टेशनरी पॉइंट विल बी एट 0 n पाई. ओके,
जी सर। Got it? जी सर। And so third point is before third firstly हम इसको थर्ड को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं. फर्स्टली आसानी के लिए समझने के लिए, ताकि बाद में फिर आप कंफ्यूज ना हो. फर्स्टली फाइंड द पॉइंट्स फॉर maxima and minimum. Find the point for maximum and minimum point. हादी आप इधर हो? जी सर। अच्छा, okay. So we have to find the maximum and minimum points. Firstly, we have to find the maximum and minimum point. So f dash theta I is minus sine theta, and f double theta I जी will सर। be, that will be a minus cos theta. माइनस कॉस। Now we will put the value. Now we will put values. Okay. What was point? Point was point is 0, pi. Okay. So minus, 0 and 5. yes, at minus at 0. Oh, sorry, I am interested to change the color. I think black will be better. Minus yes, minus cos 0. Yes. What is the value of this? 1, minus 1. And at double theta I must replace it, sorry, theta I minus cos pi, and pi पे minus cos pi, cos 0 1, and minus pi पे cos is, yes, minus 1, that will be a plus. So this implies that after finding the stationary point that was a 0 to pi, I try to find which point give the maximum value of our function, that given function, that is cos theta, at what point that which point will be a point will be a give the maximum value of cos theta, and which point will be give the minimum value. So I have find it that the given function will be maximum at theta equal to 0, as I proved here, and it will be at given function will be a minimum minimum value at theta equal to pi. Unfortunately, during class recording was stopped, so that's why I'm explaining here. So when I put the value of that mean cos theta, given function cos theta is maximum at theta equal to 0 due to the second derivative test. Okay, so sorry. So that mean, as I have already explained that explained that at 0 at theta equal to 0, the given function will be maximum, and at theta equal to pi by 2, the given function will be maximum, and given function is cos theta. So cos theta maximum value, because that maximum value is at 0, so when we put cos 0, that is equal to plus 1, that will be a maximum value. Similarly, as we have already explained that cos theta by second derivative test, I have already explained that our cos theta, sorry, our given function, which is cos theta, that will be minimum at theta equal to pi by 2. So when we put this value of theta in given function cos,
pi, that will be equal to -1. So cos theta minimum value will be a -1. So maximum value will be a maximum value of cos theta will be +1, and minimum value will be a -1 for the domain given domain, that is -pi/2 and 3 pi/2. And this value will be a maximum and minimum for a complete domain and range. Actually, cos theta value is bound to the maximum plus and minimum to -1, and it vary between these two values. So it can't be greater than 1, and it can never be less than -1. So that uh, it will varying between plus, minus, and -1 of cos theta. Similarly, sine value will be also varying between +1 to +1 and -1. Thank you very much. Best of luck.